आज़ादी। क्या है आज़ादी? इसका एहसास आम तौर पर उन्हीं लोगों को होता है जो इस कैफियत से महरूम होते हैं, और अक्सर जिनको लगता है कि वो आज़ाद हैं, हकीकत में कैद होते हैं। क्या आप भी कैद हैं? हम में से हर एक किसी न किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहा है। किसी के लिए बहुत कुछ बहुत कम है, और किसी के लिए बहुत कम बहुत कुछ। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना वक्त, कितना पैसा, इजहार राय की आज़ादी, सोच, मकसद और उसूल तय करने की आज़ादी हकीकी आज़ादी है, और वाकई अगर ये इतनी सब्जेक्टिव टर्म है, तो फिर हम खुद को आज़ाद कैसे कह सकते हैं? और क्या हम कभी वाकई आज़ाद हो भी सकते हैं? क्या आज़ादी का ताल्लुक वाकई सोच के साथ है? From the hills of ancient Greece to the chambers of parliaments, demonstrations in the streets, and dinner table discussions, it is a term that has defined debate for millennia. The philosopher Immanuel Kant believed freedom was to live according to a law given to oneself, for it to be neither biologically determined nor socially constructed. Although the distinction between biological determination and social construction is itself not as clear as it may appear, for society itself is a social manifestation of our biologically driven tendencies. This is the point from which we embark on an exploration of a belief that has defined human history. Azadi yani freedom. Freedom is something that all of us strive for. Freedom to express, freedom of belief, freedom of choice, freedom to be who you want to be, and financial freedom. In today's age, financial freedom is as important as freedom to express, as both of them correlate with each other. ज़हनी गुलामी की एक बड़ी हकीकत यह है कि हम खुद नहीं जानते कि हम गुलाम हैं। फॉर एन इंस्टेंस, जिस सरमायादाराना निज़ाम के नीचे हम रह रहे हैं, उसमें न सोच हमारी है, न ख्याल हमारा है, न नज़रिया, न उसूल और न मकसद। हम सोचते वो हैं जो हमें सोचने को कहा जाता है, करते वो हैं जो हमसे करवाया जाता है, या यूँ कहें कि जो कुछ हमारे लिए छोड़ दिया जाता है वही हम करते हैं। लेकिन क्या ये सोचना कि हम ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं, इस बात की दलील नहीं कि हम आज़ाद हैं? क्या इस बात को तस्लीम करना कि हमारे उसूल और हमारा मकसद हमारा नहीं है, इस बात की तरफ इशारा नहीं कि सोच तो फिर भी हमारी ही है? Aren't we free to think when we can think that we aren't free to think? This paradoxical question may sound true, but the reality is quite the opposite. This modern slavery just reminds me of Bukowski's letter, in which he wrote, "They call it 9 to 5. It's never 9 to 5. There's no free lunch break at those places. In fact, at many of them, in order to keep your job, you don't take lunch. Then there's overtime, and the books never seem to get the overtime right. And what hurts is the steadily diminishing humanity of those fighting to hold jobs they don't want, but fear the alternative worse. People simply empty out. Their bodies with fearful and obedient minds. The color leaves the eye. The voice becomes ugly. And the body, the hair, the fingernails, the shoes, everything does." As a young man, I could not believe that people could give their lives over to those conditions. As an old man, I still can't believe it. What do they do it for? A television? An automobile on monthly payments? Or children? Children who are just going to do the same things that they did? To be honest, I have never seen a person who feels satisfied with his 9 to 5 job. And by satisfied, I mean who thinks that whatever he does in those hours is serving one of his life's goals. So what is the point of giving more than 1/3 of your life to something that does not serve your soul? I mean, is it really worth allocating that amount of time to something that doesn't mean anything to us? It's a luxury to pursue what makes you happy.
It's a moral obligation to pursue what you find meaningful. In the world that we live in, every one of us is being enslaved to serve a capitalistic system that wants to impose its values and standards in order to attain its own interests. So it imposes on the people an education system in the schools to which they are forced to send their children, no matter how much this education system contradicts the truth. Then, it reshapes our minds and psychology through manipulative media, which serves its purpose and distorts our minds, principles, and beliefs. So, how can we stop serving the system and start living? Apart from voicing your opinions about the evils in society, it is important to break the chains. आज़ादी के लिए उस लाइफ साइकिल से निकलना ज़रूरी है जिसने हमें कैद किया हुआ, उस लाइफ साइकिल से जिसका 1/3 हम पैसे कमाने में गुजार देते हैं। पैसे, वो कागज का टुकड़ा जिसे हासिल करने के लिए हर इंसान दिन रात एक कर देता है, लेकिन फिर भी कोई ये बात तस्लीम नहीं करता कि वो भी इसी दौड़ का हिस्सा है। We are so consumed by the idea of working hard and earning money that we have lost the true essence and purpose of life. I mean, there must be more to life than just existing and having a pleasant time. And which is why, following one of my friend's advice, I started investing in stocks. और यही वो चीज़ है जो करंट जॉब मार्केट इंस्टेबिलिटी के बावजूद भी पैसिव इनकम जनरेट करते रहें, ताकि आप अपने उन कामों को तरजीह दे सकें जो आपके लिए कोई मायने रखते हैं। और अगर आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक्सक्लूसिव मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। इस ग्रुप के ज़रिए उन बेसिक, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को आसान तरीके से समझाया गया है ताकि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसको सही तरीके से इवैल्यूएट कर सकें। वीकली राउंड अप सेशंस जिनसे आपको फाइनेंशियल मार्केट्स का ओवरव्यू मिल सके, जिससे ना सिर्फ आप मार्केट को समझ सकें बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट्स महफूज भी बना सकें। इस ग्रुप में उन शरिया कंप्लायंट कंपनीज को आइडेंटिफाई, शेयर और डिस्कस किया जाता है जिससे आप एक हलाल जरिया आमदनी पैदा कर सकें। This training program is designed to help you understand the basics of investing and enable you to start generating income. And because this program is run by some experienced investors, I strongly believe this is going to help you a lot.